This is a idiom in English. Don't reinvent the wheel. Don't play with fire. तो reinventing the wheel means already किसी ने कर दिया है, आप उसको फिर दोबारा मेहनत कर रहे हो 3 महीने से, सर हम ढूंढ रहे हैं इसको, आप इसका ऐसा प्राइमर बनाए हैं जो पीसीआर को देखते ही जीन एम्पलीफाई कर देगा. डोंट डू दैट, राइट? देयर आर मेनी पीपल हु हैव वर्क बिफोर यू. Stand, science is done by, there's a very good proverb, we stand on the shoulders of giants. So there are many people who have done science before you. Real-time PCR is, and RT-PCR, reverse transcriptase PCR, these are pretty old techniques, right? Like almost 30 years now. So you have lots of data. Data is present in database. There are two databases. One is the Q primer DB, then there is the primer bank. Visit. आज हम लोग उसको भी जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है. So primer bank and Q primer DB, these are very good and these are active databases जहां पे आपको जाके specify करना होगा कि आप किस जीन के against ढूंढ रहे हैं. And if you are working with a modern system, like you are working on mouse, right? Mus musculus, Ratus norvegicus, zebrafish, or any modern system जो कि well established है, you will get your primer. But अगर आप एक wild species पे कर रहे हैं, right? मैना पे कर रहे हैं या leopard पे कर रहे हैं, chances are कि वहाँ के primers आपको नहीं मिलेंगे. But since most of us work on standard modern systems, we should be able to get our primers from this website. इसके आगे आपको कुछ सीखना ही नहीं है. आप यहाँ जाइए, सर्च कीजिए, प्राइमर मिल गया, गो थ्रू द रियल एक्चुअल पेपर, अंडरस्टैंड देयर प्रोफाइलिंग कि उसने कैसे उसको स्टैंडर्डाइज किया. आपको दिक्कत हो रही है तो राइट टू द ओरिजिनल ऑथर्स. If they are from Europe and America and Australia, they will probably answer you in a couple of days. If they are from China, they may or may not answer. If they are from India, most probably they won't answer. So again, personal experience. या फिर एक मेल आ सकता है, the guy who was working has left the lab, so we do not know what he did. If you don't have that, then you have to ask yourself, why am I designing a primer? There are multiple ways you can design a primer. काफी reasons होते हैं. So one can be a general purpose amplification. You want to clone a gene. You want to clone a fragment of a gene. You design a primer. यहाँ पे आपका primer length, amplicon size, all these things you have to keep in mind. SNP detection. You want to detect a single nucleotide polymorphism. Genetics पे जो लोग काम करते हैं, humans पे जो, you want to do a methylation study. You want to design probes for RT-PCR, real-time PCR, microarray probes, degenerate PCR. मेरा PhD topic. Multiplex PCR, we just discussed. So you have to ask this question first. Why am I designing this primer? What are my primers ultimately going to do? Then you have to ask, where should I begin? Should I go for a database of DNA sequence or a database of protein sequence? Just like I was telling about, Rajkumar sir ने भी बताया कि मेरा I went from protein sequences because I was designing a gene, because मेरा gene bank में मेरा वो था ही नहीं sequence जिसके against मैं primer design करूँ. Right? So I relied on homology कि जो area highly conserved होंगे. I hypothesize, if in my animal I worked on a model system, Heterotristis fossilis, सिंघी एक मछली है, तो उसका genome sequence ज़्यादा known नहीं. Nobody did a genome sequencing, at least when I worked. So I did not know the genome sequence. Hence I relied on protein sequences जो already database में available हो. उसको align करो, उसके जो regions हैं जो कि highly conserved है उसको लो, go back, try to do a back calculation to what could be the DNA sequence for this codon, and then you design a set of primers. Are you will you use multiple DNA and protein sequence files? ये भी हो सकता है. You can use, rather than using multiple protein files, you can also use multiple DNA files, right? Again, for the same reason, that you want to find a consensus region.
Do you have your gene bank ID for the gene? आपके पास उस जीन का जीन बैंक आईडी है? You if you have the accession number of that gene, all these things you have to prepare. होता है ना, खाना बनाने से पहले आप रेसिपी पढ़ लेते हो ताकि आप दुकान से वो सारा सामान ले आओ। ऐसा नहीं कि लास्ट स्टेप पे थोड़ा सा शक्कर डालना था, आपके घर में शक्कर नहीं है, आप चले बनाने खीर। सो यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू डू इट? मैनुअली कोई नहीं करता। यू विल यूज मल्टीपल सॉफ्टवेयर। नाउ डिफरेंट देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल। कुछ कमर्शियल्स हैं, कुछ फ्री टू यूज है, कुछ आपके कंपनी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। लाइक देयर इज अ कंपनी कॉल्ड आईडीटी, इंटीग्रेटेड डीएनए टेक्नोलॉजीज। दे गिव सम कैलकुलेटर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। You have to think of concept of डिजाइनिंग क्राइटेरिया क्या है, उसमें डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या होता है, और कुछ सेटिंग्स होता है ना एडवांस सेटिंग्स। कैन आई प्ले विद द एडवांस सेटिंग? इज द एनालिसिस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव? इज इट यूजेबल? इज इट अ वेब सर्वर दैट कीप्स ऑन हैंगिंग? मेरे साथ हुआ था। आई यूज्ड टू डू डिजेनरेट पीसीआर। देयर वाज दिस वेब सर्वर कॉल्ड iCodeHop। Now, iCodeHop एक ग्रांट से रन होता था इन द यूएस। तो बीच बीच में जब ग्रांट का पैसा खत्म हो जाता था तो वेबसाइट हैंग हो जाती थी। देन यू हैव टू राइट टू द मेन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कि सर आई वांट टू यूज। देन यू वुड राइट टू मी दैट his name was Richard Boyce from University of Washington. He would write that we are awaiting grants. Maybe after the next 3 months, the website will start working. ये भी होता है, but usually most of the websites are up and running. So make sure before you, since most of you are attending this workshop with the idea of picking up a skill and with the idea that perhaps you will do your PhD 5 साल का होता है, right? आप कितने भी तेज बन जाओ, 1 साल आपका कोर्स वर्क में चला जाएगा, 1 साल आपको टॉपिक समझने में चली जाएगी। By that time आपका JRF खत्म, then you are in the SRF। फिर लैब के कुछ उठ पटांग काम होते हैं। सपोज यू हैव टू जनरेट पायलट डेटा फॉर योर PI, तो वो भी करना पड़ेगा। देन आपके कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आपकी शादी हो गई, उसमें टाइम चला गया। वर्स, यू बिकम अ पेरेंट, तो बच्चा भी समय मांगने लगेगा। सो बाय द टाइम यू एंड 5 years, आपको लगता है मैंने तो 1 ही साल काम किया। But what happens is if you start using a software in the year 2024 and then you realize by 2029 that software is gone, you might end up in trouble. Look before you leap and plan your experiments in a way that within 6 to 7 months, जहां पे किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, you do that. Most of the softwares are आज के डेट पे क्या है, वेब सर्वर बेस्ड। हमारे टाइम में क्या था, यूज टू डाउनलोड exe फाइल्स, और उस exe फाइल को हम लोग 3-4 पेन ड्राइव, 2-3 CD में फैला के रखते थे, ताकि अगर कंप्यूटर खराब भी हो गया या फिर वो exe फाइल ही गायब हो गया इंटरनेट से, then we can use from our CD. And again, always consider a second opinion. Talk with your seniors, talk with people who have already worked. If you are new to such thing, like you can attend workshops, you can look through YouTube tutorials. Best, you can talk with somebody in the department who has already done this. It can be somebody outside of your lab. Like me and Rajkumar sir, we were not in the same lab, but most of the time I came to him for suggestions because in my lab nobody did PCR. Okay, back to the basics. So where do we start from? So this is the first set of rules. Again, rules are meant to be broken, so don't take it कि यही rule है, इसके आगे कुछ नहीं है. There would be cases where you would break this rule, but this should fit 95% of the scenarios. If you are using a primer that is too short, what will happen? It will lead to low specificity. Usually we tell use 18 to 24 base pairs. Beyond that, उसके नीचे आप जाओगे, there is a high probability that you will end up having your primer will go and bind with non-specific sites. If it is too long, you are very smart. आप कहते हैं नहीं सर, हम तो highly specific बनाएंगे. I will use a 50 base pair primer.
Welcome. People use that. But then you have to men- keep in mind that the template binding efficiency of the annealing temperature, the melting temperature, all these physiochemical characteristics of the primer will now change. आपका जो thermal profile है, usually what is the thermal profile? We heat it at 94, right? We cool it back to 55 to 60, where primer anneals, and then we take it back to 72, right? In a thermal cycler, the process is PCR, the instrument is called thermal cycler. Try to understand the difference. Many people कहते हैं ये PCR machine है. It's a very crude language, right? It's some like they telling, holding up a packet of or a strip of paracetamol and telling ये सफेद गोली बुखार कम करने के लिए आती है. Don't tell सफेद गोली, just tell this is thermal cycler because it's is cycling the temperature. Issue क्या हो जाता है? Suppose your PCR primer and there is a ramp speed we discussed. कुछ लोग थे वहां पे. जैसे this instrument has a ramp speed of how much? 128 GB. कौन बोला? हार्ट अटैक मत कराओ, आज राज देना. Ramp speed is the speed at which the temperature changes in a thermal cycle. So in this instrument, the ramp speed is 6 degrees Celsius per minute. Try to write it down. We are very weak with remembering. Per second. Per second, sorry. So 6 degrees Celsius per second. So 1 second में वो 6 डिग्री ऊपर ले जाएगा, 6 डिग्री नीचे ले आएगा. This is a very costly instrument, I suppose, because most PCRs that you would be using will have a RAM speed about 3 to 3, 4 max. 6 भी आ गया, हो सकता है आगे चल के 10 भी आ जाए. But point fact of the matter is, now if you're using a long primer and suppose your annealing temperature is 70 और 69, आपको क्या लगता है टैग पॉलीमरेज 72 पे आके अचानक 72 आ गया, काम करते हैं? Does it happen like that? 72 degree is the optimum temperature for Taq polymerase. Taq polymerase can act also at 66 and also at 75. It will work with less efficiency, but it will work nonetheless. So you have to make sure that your PCR primer is maintaining that boundary. Else क्या होगा? आपका annealing temperature is 66. Very good, sir. 72 में extension होगा. भाई साहब 66 में भी extension होता है, but very slowly. And due to ramp speed, your temperature from 66 to 72 might take 3 to 4 seconds. Taq polymerase by that time will add 300-400 bases. आपका reaction जो आएगा, it will be a huge mixture of specific and non-specific templates, and maybe you will have Taq polymerase binding on one side, दूसरा वाला primer bind नहीं किया, it will keep on extending. Next is optimum primer length, which I have discussed. Optimum amplicon size. You have made a very good primer. 20 base pair. Annealing temperature 58 degrees Celsius. Amplicon size 10 kb. Do you think you would get a good result? No. बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन जाएगा. Then again the kinetics will come into play. It's an enzyme catalyzed reaction. PCR, polymerase chain reaction, is basically a biochemical reaction where you have an enzyme, you have a substrate, and you get a product. What is the enzyme? Thermus aquaticus. What is the substrate? The DNA template. And what is the product? The amplicon. Now if the amplicon is very big, more than 3 kb, you have to put a very long extension cycle. And what happens is, since this is a DNA polymerase, now physics comes into play. क्या करता है? DNA polymerase binds with the DNA, then runs over the DNA. Now there is a probability that it will fall off the DNA. अगर आपको बोला जाए यहाँ से यहाँ एक straight line है, एक rope है, आप यहाँ से यहाँ जाओ, आप जा सकते हो? Most probably yes. If you're highly trained, maybe from this end of the room to that end of the room. अब यहाँ से मैं स्टेशन तक एक
रस्सी बांध दो और बोले चलो भाई तुम तो रूम में अच्छे से चल रहे थे, यहाँ पे भी चलो, you might be there is a chance that will fall off. So ये होता है. The entire complex falls off from the DNA and then there is no proper extension. So if you are trying to do for general cloning, avoid more than 3 kilo base pairs. Ideally it's up till 1000 base pairs or 1 kb. But अगर आपको करना है तो क्या करोगे? There are specific polymerases for that और वो आपका tag polymerase नहीं है. देर आर लॉन्ग पीसीआर के लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं, इसके लिए अलग एंजाइम्स हैं. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट नाउ. आई एम टॉकिंग ट्राइंग टू कीप इट एज जनरल एज पॉसिबल. मेरा फोन साइलेंट है कि नहीं? Okay, now next point is melting temperature. अच्छा, हमने पीसीआर रियल टाइम के बारे में बताया नहीं. रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है? इफ यू लुक एट दैट एक्सटेंशन साइकिल, यू डोंट एक्चुअली हैव अ प्रॉपर एनेलिंग एंड एक्सटेंशन साइकिल. एनेलिंग काफी शॉर्ट होता है. एंड व्हाट डू यू नीड? यू जस्ट नीड कि आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके साथ थोड़ा सा साइबरग्रीन अटैच कर जाए and it creates a fluorescence. A fluorescence strong enough for this instrument to pick up. Or perhaps you want कि छोटा सा एक प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाए and that probe is dislodged. आपका जो फैम और एक्स है it gets away from the quencher and it creates a fluorescent signal. यहाँ पे आपको क्लोनिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस you have to detect a signal and that signal is good enough even if it is for 50 base pairs, 100 base pairs, 125 base pairs. Beyond that, if you go beyond 150 base pairs, क्या होगा? Since you don't have the time or the thermal profile जो बनता है thermal cycle में, उसके प्रोफाइल में देखो 150 बेस पेयर के ऊपर आप जाते हो, you start creating lots of unnecessary noise. Lots of cybergreen is attaching, lots of fluorescence. तो आपका जो ये distinction है between cycle 1 and cycle 2, 2 and 3, and I'm talking of an exponential reaction, a chain reaction. So 1 becomes 2, 2 becomes 4, 4 becomes 8. Signal keeps on growing. अगर बहुत बड़ा प्रोडक्ट होगा, what will happen? कभी आप सड़क पे चल रहे हैं, दूर से कोई गाड़ी आ रही है, अंधेरा सा सड़क हो, कंप्लीटेड डार्क, दूर से कोई गाड़ी आ रही है हाई बीम पे, आपके आंख में अगर रोशनी लगती है क्या होगा? कुछ दिखाई नहीं देता. The moment the car moves away, you are completely blinded. It will take about a couple of seconds to see आगे क्या है. If your product length is too big and if the cybergreen signal is too high, after 15 to 20 cycles, what will happen? It will blind your sensor. There is so much of signal. Now, many of you would have done is protein estimation, right? तो प्रोटीन एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं ताकि 10x, 50x, 1x, 2x ये जो है उसमें एक लीनियर रेंज है, राइट? वी डाइल्यूट द प्रोटीन. तो यहाँ पे इमेजिन योर पीसीआर प्राइमर्स दे विल create a product that will bind and fluoresce. You have to keep it as diluted as possible, but at the same time you don't want a dilution that will not give any signal. To prevent that blinding of the sensor, you cannot go for a really big product. आपका पहला प्रोडक्ट 250 बेस पेयर का है, वेरी गुड, परफेक्ट प्राइमर. Primers will work perhaps in the very small short duration of time. वो सिग्नल भी जनरेट कर देगा, 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle तक सब ठीक है. Moment it enters 11th cycle, suddenly there is a blinding. अगर ये ब्लाइंडिंग हो जाता है सेंसर के तो आपको क्या दिखेगा इन द ग्राफ? Plateau. Now the sensor cannot differentiate between less and more fluorescence. So make sure that when you are designing for real-time PCR, the products are short. Less is more is the principle. So in PCR, especially in real-time PCR, less is more. Because you have to think by the end of 30 or 35 cycles, especially true for cybergreen. When we
come to the concept of melting temperature. So basics of melting temperature, many of you would have already studied in MSc that when you heat DNA, it unwinds. Why does it unwind? क्या होता है? क्या होता है? Breaking of hydrogen bonds. So the hydrogen bonds, they break and your DNA becomes single stranded. And 50% of the DNA becomes single stranded. That's the definition of melting temperature. When 50% of my DNA exists as a single stranded effect. So how does it impact primer design? So if you have a long primer, there will be more ATGC bonding, TM will be impacted. If it is a short primer, less bonding, less melting temperature. Also, we have lots of salts in the PCR reaction mix. Right? We have MgCl2 and buffers. So if you have a salt concentration, that will also impact the TM. And you have a working approximation of calculating TM, that is 218 plus 4 GC. And this is only suitable for 18 mer or shorter oligos, but you don't need to worry. You just Google TM calculator for oligos, Thermo Scientific, IDT, Sigma, Merck, तमाम वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे एंड यू वुड बी वंडरिंग कि कौन सा टीएम मानो, क्योंकि देन यू विल हैव सांता लुसिया, हाशिमोटो और न जाने क्या क्या, बिकॉज एवरीबडी they are mathematicians. These mathematicians have created different models of creating approximately measuring the TM. कहीं कहीं पे आप salt correction भी कर सकते हो. So it's open to you how much you explore and how much you want to spend time. We'll look into it. Then you have the optimum melting temperature. So optimum melting temperature or TM should be between 52 to 60. That should be the optimum temperature. TM above 65 should be avoided because of secondary annealing. Why? What is secondary annealing? What is annealing? When the primer comes and binds to your template. Secondary annealing means it is going and binding at other regions, right? और मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि if you keep those thermal profiles very close to each other, there is a high probability इधर उधर सिग्नल जाके मैच करेगा. Suppose you have your TM of 65, you bring it down to 55. Now at 55 वो बहुत ज्यादा खुश है, right? It's just like when we get pocket money for the first time, या फिर हम लोग को जब पहली बार मार्केट भेजा जाता है, जाओ ये खरीद के लाओ और 2 रुपए बच गए. Now you are in a क्रक्स, क्या खाए, टॉफी खाए, गोलगप्पा खाए, कि कुछ बीड़ी पी ले. So many options, कुछ एडवेंचरस करते हैं. So this happens with the primers. You have set it at 65, now you're annealing it at 55. At that low temperature, it will kind of anneal with multiple non-specific templates. It will again. Then is the very important factor, the primer pair TM mismatch. So remember, we are always talking of two primers, the forward primer and the reverse primer. But we are talking of one reaction, one thermal profile. Now, if you are going to a place and you ask for a direction, okay, and somebody gives you a direction, you have a car, but somebody gives you a direction कि how to come walking, right? अभी सर के साथ घूम रहे थे तो हमने देखा कि जो हॉस्टल्स हैं पहाड़ों के ऊपर है तो सीढ़ियां हैं. Then there is a road also, right? So somebody gives you a direction कि हाँ पैदल आ जाना, फिर सीढ़ी से चढ़ के आ जा, and you have arrived by car. Your car cannot go up the stairs or arrived by scooty. Scooty भी सीढ़ी से नहीं जाएगा, so direction तो बेकार गया. Then you have again, अरे यार मैं स्कूटी से आई हूँ, कहाँ जाना है? Then अरे तू आई है ऐसे, घूम के आना. So point is, there should be a match. Now if there are two primers, one is annealing at 52, another is annealing at 62, you are doing one reaction.
You have set your annealing temperature at 55 in your thermal profile. At 55, 62 वाला तो आके बाइंड कर जाएगा. तो annealing इसका 52 है, will it be able to bind? Technically no, practically all. What will it impact? It will impact your PCR efficiency and it, because both the primers are not able to bind properly. So the ideal difference is less than 5 degrees Celsius, but with computers you can bring it down to less than 1 degree Celsius, because अभी इतने softwares capable है, it will span through the entire genome and will find some region. Up till now, any of you are having any doubts? सब समझ में आ गया या फिर कुछ समझ में नहीं आया? फ्रैगमेंट के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ बेटा. साइबर मैं गरीबों का टीचर हूँ. जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ वो भी गरीब, जहाँ पे पढ़ा वो भी गरीब, बीच में पोस्ट डॉक किया तो वो काफी अमीर लैब में. तो फ्रैगमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिकॉज देयर यू हैव टू लर्न हाउ टू डिजाइन अ फूड. दिस इज मोस्टली फॉर साइबर ग्रीन. जीपी सर ने बताया था कि आप लोग साइबर ग्रीन ज्यादा यूज करते हो. फ्रैगमेंट करते हो फ्यूचर में? बेटा प्रेजेंट संभाल लो, फ्यूचर का नहीं पता. फ्यूचर का तो ये है कि nowadays big labs do not even use real time PCR. They use NGS, whole transcriptome sequencing. Real time PCR का जमाना गया. Now they are using digital droplet PCR. This is the future. Tacman is irrelevant. पैसे कम है तो साइबर ग्रीन में कर लो, पैसे ज्यादा है गो फॉर डिजिटल पीसीआर, उससे भी ज्यादा प्रोटियोमिक्स. एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दिस, good question. At that 55 degrees temperature, due to the kinetics of that long temperature, DNA template is actually very long, right? Mostly maybe to be genomic DNA fragment or cDNA. So these are longer fragments. So at 55 degrees Celsius or 58 degrees, ये जो 55 to 60 shorter fragments, they can bind, they can hybridize properly, but the longer fragments, they cannot become double stranded again. Right? Or in our thermal setting, 55 is the lowest temperature. We go to and fro. If you go, that's why we should not go for any very short primers. अगर यही मुझे 40 पे annealing करना हो, it will be a disaster. Right? Another reason is of not bringing the temperature very low is formation of secondary DNA structures. Right? The DNA can form loops. बन सकता है? If there is a GC repeat sequence, long हो सकता है. There are GC and AT repeat. जहाँ पे repeats होंगे, there is a probability of forming a loop, a hairpin loop. So we should keep the temperatures so high that these loop formations are avoided. So 55 is a sufficiently good temperature. Try putting your hand in a 55 degrees Celsius water, you will realize garam hai kafi. So we avoid that. Anyone? It's not a function of primer. Degenerate PCR हम लोग तब करते हैं when we use degenerate primers. ये मेरा आरपीटी का सवाल. So degenerate PCR में हम लोग क्या करते हैं? The primers that we are using is not a single primer, right? You understand the degeneracy of the codon. For a single amino acid, we can have 2 to 3 codons. Now suppose I have a string of amino acid, 10 amino acids. We don't even use 10 amino acids. We keep it to like something like 7 to 8. That keeps our primer to 21 to 24. Now there are 8 amino acids, and those amino acids could be coded for by 20 to 30 different types of codons due to degeneracy at every. So एक permutation combination होता है. तो आप जो primer देते हो,
आपको लगता है आपने एक प्राइमर दिया, बट यू नो हाउ दोस प्राइमर्स लुक. दोस प्राइमर्स का जो सीक्वेंस होता है, मे बी अ नॉर्मल प्राइमर विल लुक लाइक A T G C C T P A G. Degenerate primer might look N T G N N C R T N. What does this N mean? N nucleotides. R means pyrimidine. So these kind of, so यहाँ पे actually I'm not using one primer. Just to keep things simple, suppose I have just a short primer, just telling NTGN. This is my sequence, a degenerate primer sequence. This degenerate primer sequence would mean my primer is basically a pool of A D G A C T G B C T G C G T G G A T G T. Because you see, ये एक n को satisfy कर रहा है, ये भी एक n को satisfy कर रहा है. Now these two n's I can have a combination, like this can be A, this can be T, another can be C A T G G. ये भी इसको satisfy कर रहा है. So what you add in the primer or degenerate primers is a pool of primers. And this is why it has a very limited application. Wildlife पे कोई काम कर रहा हो या फिर non-traditional models पे काम कर रहा हो, only then they need it. Otherwise, for any organism for whom sequence is known, you don't need to use that. And these degenerate primers are very risky, especially when you are trying to. There is a lot of cross specificity. Because the very reason that I am not using one primer. हमें लग रहा है मैंने एक primer use किया, but that primer contains a pool of multiple sequences. And even if my primer sequence would have been NTG, it would have been, it could be ATG, it could be CTG, it could be GTG, it could be TTG, right? This single N could mean there are 4 variations. और आपके प्राइमर में, degenerate primer में ऐसे 2-3 N होते थे, 2-3 R होते थे, then there was. So that would have made a huge pool of primers. Usually, for my studies, I calculated my pool of primers were actually 200 to 250 different primer sets. So in degenerate PCR, what you do is you run PCR. Once you get the product, immediately you send it for Sanger sequence. जैसे आपने Sanger sequence ले लिया, now you know what is your sequence. A good hack is first you try to sequence at almost 400 base pairs, 400 base pairs to 500 base pairs. उसका आपने प्राइमर बनाया है, degenerate primers. From that 400 base pairs, आप जैसे Sanger sequencing करोगे, due to the intricacies involved in sequencing, आपके initial 15-20 pair, 15-20 nucleotides नहीं मिलेंगे, last के 20-25 nucleotides नहीं मिलेंगे. तो आपको एक 350 base pair का sequencing result आएगा. Next, you can use that template to design a very specific, what we known as, usually आपको पेपर में आपको इसको they usually call it GSPs or gene specific primers. Anyone else? If everything is sorted, we'll move on to the next slide. That is specificity. How do you determine specificity? Because specificity is important. I told that the only one rule, good rule, is that your primer should be specific. Now, longer the sequence of your primer, more specific it is. And then there's a problem of cross homology. When the PCR template is genomic DNA and or have mixed gene fragments. Suppose you have my real life example. You are trying to go for a GPCR, 7 transmembrane protein,
Now, these transmembrane proteins, they might be different, but their difference lies in the cytosolic domain and the ligand binding domain. बीच में जो membrane में जो 7 transmembrane domains है ना, if you look at GPCRs, they're almost the same. Now, if you design a primer using that as the template, and आपको computer को तो नहीं पता ना कि you are specifically looking for one specific GPCR, it will give you a primer. Technically वो सब कुछ ठीक है, काम करेगा. उसी को PCR करोगे, you get a single band. The moment you put it, you put your own cDNA or your own genomic DNA, आपको 15-16 बैंड आ जाएंगे. क्यों? Now you have amplified successfully all GPCRs available because your primers were looking for. This is cross homology. This is not only for GPCRs. Suppose you want to detect for a virus. कौन सा virus काफी famous हुआ है? SARS-CoV-2. What is it? Coronavirus. इससे पहले हमारे पास कोरोना वायरस थे. Of course, we had lots of coronaviruses. Sarcoviruses family में all are coronaviruses. Now there are few regions of any animal that is highly conserved. Any viruses or any pathogen you see like coronavirus inside work on it. Nucleocapsid protein होता है. Something like a histone protein. It helps the genomic material to be stabilized. ये nucleocapsid protein जो है हर coronavirus is almost same. Where lies the difference? The spike protein domain. जो कि हर coronavirus अलग होता है because the way they enter or they interact with the host is different. Now, if you design a nucleocapsid primer and you want to detect COVID, भाई साहब पूरी दुनिया में COVID detect कर लोगे आप. So, by detecting, if you use your brain of a scientist, right? What is the biological question and what could be the perhaps homology कहाँ से आ सकती है? Am I trying to work on a highly conserved gene? Or I'm trying to work on a gene family? Or I'm trying to work on a transcript variant? There are genes that have produced different lengths of transcript, short transcript, long transcript. Dopamine receptor has lots of multiple genes have transcript variants. Now there are transcript variants के साथ काम करोगे and you will not be very specific with your primer designing. You will most likely end up with lots of noise in the weight. Sample में आपको क्या दिखेगा? When you will do a melt curve analysis, your melt curve will look like a very good MF painting. It will look like this. Pahad. Why? These are products. You run it on a band, again आपको एक सीढ़ी दिखाई देगी. You will feel that you are playing Ludo and you have just found a good ladder. So you have to be very specific regarding the biology of your gene or your template. Is it a highly conserved gene? Does it come from a family? Is it like GPCR families, globin family? Is it a family? Do they have areas of genes which are actually almost similar to each other? Then your primer, despite being within quotes specific for gene A, will also pick up 3-4 variants or family members of A. So it will pick up A1, A2, A3, A4. Also, we are looking for a transcript variant. Now, are you looking for a longer transcript or a shorter transcript? Longer transcript, तब तो ठीक है. Longer transcript है. So if there is 2 transcript variants, one is short, one is long, design primer from here. If you are working on a shorter transcript, it up to get. Why? This area is common. Then you have to run another PCR. आप 2 primer डिजाइन करोगे. इसका expression देखोगे, इसका expression देखोगे. Then you will tell, okay, the short transcript was upregulated because the longer transcript gave less results. समझ में आया? Apparently, PCR काफी easy है. How many of you have gone through the Dunning-Kruger
कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना एक बार, डनिंग क्रूगर। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मैं क्लास में तो काफी बार बोलता हूँ। विल कम टू इट एट द एंड ऑफ इट। Then avoid non-specific amplification. So sometimes your primers could be spanning this intron exon and exon boundaries. I think last class we had a small discussion that if you're trying to avoid genomic DNA contamination, go for exon junctions. Else, you're trying to amplify for mRNA from the cDNA, थोड़ा सा genomic DNA रह जाता है, right? Don't believe in protocols. का जो फ्लो चार्ट होता है ना, they are the biggest lies told to scientists. फ्लो चार्ट में आया, you add take extract, total extract, आपने न्यूक्लिक एसिड टोटल एक्सट्रैक्ट किया, आपने डीएनएज में इंक्यूबेट किया, फिर you get purified RNAs. No, you don't get purified RNAs. You get purified RNAs, maybe 98%. Then there is some 2% of genomic DNA जो एंजाइम नहीं मार पाया, और थोड़ा बहुत ड्यू टू योर पिपेटिंग एरर्स, ड्यू टू योर अनहाइजीनिक वे ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, मे बी योर सीरियस वे ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, यू आर यूजिंग पिपेट्स, थोड़ा सा कंटेम आ गया। बेस्ट वे टू अवॉइड इज आप जितना पहले से तैयारी करके रहो। सो ट्राई टू मेक एक्सॉन बाउंड्रीज। GC content, optimal GC content 45 to 55. Why do we need good GC content? क्या खास है भाई GC में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कुछ फर्क है AT और GC में? Okay, so GC gives you more structural stability, right? आपने एक कील ठोकी, थोड़ा सा मजबूत हुआ, दो थोड़ा ज्यादा, एक से भले दो, दो से भले तीन। So since you have higher GC content, you see this is a hybridization process. ये जो हो रहा है हाइब्रिडाइज हो रहा है, प्राइमर और टेम्पलेट DNA they come and hybridize. Now this is DNA, this is primer, now this is an artificial gene. वो जब हाइब्रिडाइज करेगा, अगर ज्यादा GC रहेगा, will be more triple bonding. Somebody was asking the question about temperature. So why you should not bring it too down, take it too high, leaving. This GC gives you sufficient amount of structural stability to that primer DNA template complex, so that एक और बड़ा प्रोटीन आप उसके ऊपर बैठ सके। Imagine you have a good ladder, but उस ladder के बीच मे बी एक दुबला पतला सा आदमी उसको चढ़ना है, तो बीच बीच में होता है ना लैडर में जो सीढ़ी होती है, लोग रस्ते भी बांध रहे, बट इमेजिन एक रस्सी से बंधा हुआ सीढ़ी, उस पर मैं चढ़ रही, लैडर तो ऐसे फट जाए। तो मोस्ट प्रोटीन्स आर प्रीटी बल्की एंड हेवी, so when they sit on that hybridizing ladder, if you have less of GC, there is a high probability that this entire complex will fall apart. Next is runs or single base stretches. Long runs increase mispriming, non-specific annealing potential. A maximum acceptable number of run is 4 base pair. Means when you have a repeat of bases, right? T T T T, G G G G, C C C C. Now point of this is ऐसे repeats आपको पूरे genome में काफी जगह मिलेंगे, and these repeats are very dangerous because that increases the chances of mispriming. किसी और के साथ जाके bind कर जाना to some other region of the DNA. So to avoid the mispriming, we keep it to a very short 4 base pair, not less than that, more than that. And consecutive dinucleotides again increases the mispriming potential. AA, TT, GG, CC ऐसे में avoid करता है, because these repeats are ऐसे फेंका गया है पूरे जीनोम में। If you understand eukaryotic genomes, if you go through the sequencing, you would find ऐसे repeats, dinucleotide and mononucleotide repeats चारों तरफ है। So it does not increase the efficiency or the specificity of your primer, rather it reduces it. So we have to avoid those things. Then hairpins.
सेल्फ टाइमर क्रॉस टाइम. नाउ सपोज आपने एक 24 बेस पेयर का प्राइमर बनाया and now they have become self complementary and they will form a loop. Now since primer अपने में ही दोस्ती कर लिया, will it go and bind with your template? No, right? All a hydrogen a base needs to get stabilized is some bit of hydrogen bonding. वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके प्राइमर ने खुद से ही वो खुद से पा गया, राइट? लाइक द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द मूवी हॉल्स, हम लोग जब छोटे थे एक मूवी आती थी, एक आई थी हम आपके हैं कौन, आई थिंक साल भर चली. देयर वाज अनदर मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. देयर इज वन, आई थिंक वन हॉल इन मुंबई, मराठा मंदिर, दैट स्टिल रन्स डीडीएलजे और सम. बट यूजुअली आप देखोगे कि हॉल में एक मूवी 10 वीक्स, 12 वीक्स, 25 वीक्स तक चलते थे. अभी क्यों नहीं चलते? नहीं, तब भी आ जाते. Even a very good movie won't run more than 2 weeks. Why do you think so? OTT platforms. So you have more ways of entertainment. उस जमाने में एक ही एंटरटेनमेंट था, दूरदर्शन. जो थोड़ा मेट्रो शहर में रहोगे उसके लिए था DD2, DD मेट्रो. उसमें गाने, फिल्मी गाने थोड़ा ज्यादा चलते थे. एल्स इट वाज अ फिक्स रूटीन. सुबह 6 बजे का न्यूज, 7 बजे का न्यूज, 8 बजे कुछ किसानी का प्रोग्राम, फिर न्यूज, फिर एक सीरियल एकता कपूर, देन फिर न्यूज, देन थोड़ा सा डक टेल्स और कार्टून्स, फिर न्यूज. और न्यूज वाज यूज्ड एट जस्ट जैसे अभी ऐड आते हैं वैसे न्यूज आते. नाउ अभी सो यू we were not happy, right? We wanted more entertainment. We went to the movie halls. एक मूवी को खोलो 3 बार 4 बार देख लो. But now if you are bored, YouTube पे रील, Instagram पे रील, कुछ नहीं तो YouTube पे एक मूवी. If you have more money, Amazon Prime, Netflix, Sony Live, so your entertainment quota is full. राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू अ फेज कि हम लोग चाह के भी सारे वेब सीरीज नहीं देख पाएंगे, राइट? इतने सारे वेब सीरीज है, इतने सारे मूवीज. हेंस वी डोंट गो टू द मूवी हॉल एंड ऑल दोज सिंगल स्क्रीन थिएटर्स दे आर नाउ शट डाउन. वी हैव मल्टीप्लेक्सेस. एक मूवी आती है, एक हफ्ते चलती है, अच्छा बिजनेस किया तो सेकंड वीक, एल्स आउट, एंड देन दे विल रिलीज इट इन द ओटीटी. प्राइमर्स के साथ भी ऐसा ही होता है. इफ दे आर हैप्पी विद इन देमसेल्व्स, अपने में ही उसको लूपिंग करने का जगह मिल गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की जगह मिल गई, देन दे विल बाइंड. एंड नाउ इट विल नॉट गो टू द टेम्पलेट डीएनए एंड बाइंड. मतलब मूवी हॉल तक जाएंगे नहीं. मूवी हॉल तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओटीटी चैनल्स बंद करने पड़ेंगे. दैट मीन्स ट्राई टू अवॉइड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटैरिटी सो दैट देयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हंग्री फॉर बॉन्डिंग. Once they are hungry for bonding, they will go and bind to your template. Right? So that is hairpins. What is self timer? आपके पास ओटीटी नहीं है तो क्या हुआ? आपके रूममेट के पास ओटीटी है. आप दोनों हॉस्टल में रूम शेयर कर रहे हो. You don't have, you have spent all your money for reasons most known to you. बट आपका दोस्त जो है उसके भाई का नेटफ्लिक्स का पासवर्ड लेके नेटफ्लिक्स देखता है. तुम भी कहते हो आज वो वाला सीरीज बड़ा अच्छा है, आज रात को देख के बैठते, असाइनमेंट कर लेंगे, कल सुबह करते हैं. So there are two primers. They are not complementary with each other, not amongst themselves, but they are complementary to each other. Short DNA fragment, as I said, has a greater proclivity of finding the double bond. They will go and bind with each other. Template here, hard. Again, you will have zero amplification. Then you have cross dimer or heterodimer. So again, intermolecular interaction between sense and so self dimer जो होता है अपने में ही dimerize करता है. Cross dimer means, as I said, forward और reverse primer में dimerization हो गया. Hairpins, they are forming loops. So I would say I need to
Okay, so what will a cell kind of, so your primer can look like this. यहाँ पे उसने bond कर लिया. Now it has lost its specificity. Or your primer is forward primer and reverse primer. They have formed a good bond. So this is cross dimerization. Sometimes they can just form these loops and they can. ये जो timer है, this is one forward primer. और primer तो आप एक नहीं डालते हो. There is forward primer. This is again forward primer. These forward primer have formed a bond themselves, right? समझ में आया सबको? So these are things we need to avoid. And this is where our first session ends. So if you have questions, next session onwards we'll go to hands-on. तो तब हम थोड़े कम we'll try to solve some real world challenges. तो अभी तक, so these are the basics that you need to remember. Remember, software आपके लिए biology deliver नहीं करेगा. Right? आपको सॉफ्टवेयर को पता है. Maybe 5 years down the line, there would be some AI-driven tool that will do everything for you. And just like the advent of smartphones made us more dumb. Look at it, बहुत सारे phone numbers याद रखते थे, birthdays याद रखते थे. Now we have to go to our Google Calculator. So we should know the basics. This is the basics of random. If you have any questions, please feel free to ask. First, we can take a break. Yes, we will come to it. So, avoiding कैसे करता है, that is how we will deal with software. There are multiple ways of checking before you order your primers. देखो एक बार प्राइमर ऑर्डर हो गया तो कहानी खत्म. वो तो बना के भेज सकते. कुछ भी एक ही सेकंड के भेजो, वो भी वो बना के भेजो. Will it work for you? Will it suitably work for you? You will do all these things. So, any more questions? So, these will take help of databases and specific tools. जिसमें वो check करता है. बहुत ज्यादा वैरी इसलिए नहीं करता. लाइक वैरी करता है तो अगेन टीएम विल वैरी. तो मैंने जो बोला था 5 degrees राइट, minimum boundary of it, not beyond 5 inches. So forward and reverse primers can vary as one can be whether it's 18 to 24. So 120, somebody can be 18, other can be 20. Somebody can be 20, other guys can be 22. That rate variation is loud. But team should not have efficient. Anyone who is usually using primers in your research, those boundary easily. आपने चेक किया था सर? Those who are into PhD, you check once you start designing our plans. As I said, there are databases which will help us avoid all these things. इतना कुछ काम जहाँ आपने सीखा, इसका एक सारा बहुत आसान तरीका है. Somebody already worked on it. It's well standardized. आप लेते हो, check करते हो. So this site that was that primers were designed as per Fourier or 2020. ट्रांसफॉर्मर से बनाएंगे, हम उसको फॉर्म करेंगे. नहीं करेंगे तो वो साइड नहीं करो तो प्रेशराइज हो जाएगा. ओके, so I will take some break. You can just wait. आज कहाँ है ऑर्गेनाइजर्स? सभी लोग सब बताएंगे क्या है मेरी. आगे the treatment of the another sequences. अंदर उसको फिर बनाना मुश्किल भी है और रिस्की भी है. फैमिली और लाइक फैमिली की जीपीसीआर फैमिली बहुत सारे फैमिलीज हैं हमारे जीन्स में. In that case, if you are using conserved regions, you get lots of. There is no way. I told transcript variant.
It's easier to work on long transcript. शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको हर बार एक लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट के लिए अलग से प्राइमर पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। तो शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट बड़ा है, लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट नहीं बढ़ा है। So you have to use your brain. And you have to understand the biology. Please come in. Please come in. So we can have a break of 10 minutes. Please come in 5 minutes. ठीक है? The further discussion और तो चाहे जब के ना बस speak minutes. Okay. I'm not against quality. I am already students. Beside the family, like I am working T virus. I am beside the family. How I will select and which gene I should take. Beside that, means what it's Yes. So taking that in the second, आगे के लिए क्या करना है? Hands on. So since you will be designing for your patient side, patient के लिए बनाने के लिए सबसे बड़ा issue है. Something that we did not discuss, but of course in the hands-on we discuss. When you are working on pathogens, we have to check that there is no cross-specificity with your host. आपने वायरस का DNA लिया, कोई भी DNA sequence लिया. Again, that's the problem of my COVID experience. Don't take any region that is shared among all classes of hepatitis cells. You are working on hepatitis B. हेपेटाइटिस डी की कुछ यूनिक रीजन्स होंगे और कुछ रीजन्स होंगे जो कि हेपेटाइटिस ए बी सी के साथ वो शेयर करेंगे कैन नॉट टेक दोस रीजन्स नंबर 1 हेपेटाइटिस सी का रीजन that region again should not match with your human genome you getting my point मान लीजिए हेपेटाइटिस डी के जीन वाई आपने सिलेक्ट किया है वर्क ऑन जीन वाई दिस जीन वाई इज वेरी स्पेसिफिक टू हेपेटाइटिस बी among viruses but now this gene Y is a fucking and there is a fair chance जब आप अपने you are talking about pregnant so what would be your starting sample for pregnant कहाँ से इसको रेडी करनी है amniotic fluid से या blood से right now you extract DNA from blood ब्लड में WBC से इसको पूरा जीनोम है वो टेम्पलेट बन गया तो you have two templates है viral template human template for designing a PCR you have to mention you keep in mind designing the assay दो चीजें आपको मानना रखना पड़ेगा first to check if you have efficiently extracted from the patient sample आपके पास एक इंटरनल कंट्रोल होगा जो कि ह्यूमन डीएनए से मैच करेगा we'll come to it in detail with all of us and you will now maybe we can collaborate on this so we will have more deeper discussions so we cannot take anything that human DNA के साथ मैच करता है तब क्या होगा हर पेशेंट पॉजिटिव होगा that means we will have a huge number of false positives. So two things for COVID. What we did we had RNA-SP. RNA-SP हम लोग का internal conclusion. RNA-SP का सिग्नल हम लोग चेक करते हैं. Why? मैं आपने बताया ब्लड से हम लोग DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे. हम खुद नहीं करेंगे. हम साइंटिस्ट हैं. कोई टेक्नीशियन करेगा. वो ब्लड ड्रॉ किया. Right? And somehow during much of the process जो DNA ferret था वो गिर गया. पर टेक्नीशियन नाम बहुत गुस्से वाली है उससे जब बोलिए पानी भर के बोल रही थी आपने PCR लगाया रिजल्ट आया 0 नहीं है सीधा मैंने बोल दिया पेशेंट इसका पॉसिबिलिटी है अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली उसमें डीएनए था तो डीएनए आप लोग देखोगे PCR लगा करोगे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वो पेट में आरओ का विशुद्ध पानी नहीं था ये कैसे बिकॉज देयर वुड आल्सो बी पेशेंट्स जिसका आपने डीएनए लिया एक्सट्रैक्ट किया ब्लड से और वहां पे आपको वायरस का सिग्नल नहीं मिला यू कैन गेट अ फॉल्स पॉजिटिव कैन गेट ट्रू पॉजिटिव कैन गेट अ फॉल्स नेगेटिव यू कैन गेट ट्रू नेगेटिव सो हाउ वुड यू रूल आउट अ ट्रू नेगेटिव फ्रॉम अ फॉल्स नेगेटिव There you have to have in your assay
a gene that should give you a signal. And since you are working with humans, you will take a human gene. Maybe pretend that should give you a signal to prove that the DNA extracted from the patient was properly extracted. बीच में कुछ गड़बड़ नहीं. And ये होता है when you are working in a clinical labs, talking about one sample. In COVID struck, we actually processed more than 5,000 samples in one day manually. सांस से गिरते रिपीटिंग एरर्स होते थे. आपको लगा आपने कुछ बफर डाला, मिस आउट. So your assay should be watertight, foolproof. उसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है. Next, suppose मैम के उस वायरस में जो मैंने बताया, there is मैम ने जिस जीन को सिलेक्ट किया, that gene has a homolog. First of all, we have to rule out that it does not cross react with A, B, C, E, F, G. सिर्फ D के साथ स्पेसिफिक हो. पर D के साथ स्पेसिफिक है, पता चला वो ह्यूमन जीनोम में एक ऐसा डेटाबेस, एक ऐसा जीन है that might give a very faint amplification. You see, हम लोग बुक में ये क्या पढ़ते हैं, प्राइमर जाके बाइंड कर दिया फुल्ली, इसके बाद PCR हो गया. No, the primer does not need to bind fully. Even if you are a 20-mer primer and 11 mers are binding, 9 mers are not binding, then also there will be a space, however so weak. In real time, it will show us it. It will show a curve. Exact same model. So all these ruling out requires lots of, first of all, in silico planning. Then once you have planned, once you get the primers, then you have to standardize the assay. थोड़ा सा hard work है. So as I said, अभी तो खरी टाइम चल रहा है. No, he has come. He has come. We can take a break. Okay. और break में हम उसका सुझाव डिस्कस कर सकते हैं. So let's start. Just before you leave, I will just show you something. ये ग्राफ दिख रहा है ना? Should I increase it more? What happens in these workshops? At least with me, this happens. कोई भी वर्कशॉप में जाता था, मेरे साथ ये दुर्घटना घट जाती थी. So when you walk into a, so this is how we process knowledge, all of us, irrespective of which position we are in. So when you walk into a conference or a workshop, you are driven by only one thing. मुझे इस चीज के बारे में जानना है, मैंने सुना है. And often you have very low knowledge. जब knowledge low होता है, आपका confidence काफी high है. और इस ये जो हाई पॉइंट है, तो कहते हैं पीक ऑफ माउंट स्टूपिड. आप देखोगे अपने लाइफ में भी काफी सारे लोग आपको मिलेंगे, कॉन्फिडेंस जीरो. याद है हमारे क्लास में जो बच्चे होते थे, जो सबसे कम नंबर लाते थे, एग्जाम के बाद कहते थे 10 क्वेश्चन थे, 10 का जवाब दे दिया, तुमने तो 2 घंटे में दे दिया, तुम लोग 3 घंटे तक पता नहीं क्यों लिख रहे थे. आई डिड इट परफेक्ट. एंड जो टॉपर होता था, पता नहीं क्या हुआ, 8 ही कर पाई, और उसके बाद भी उसमें ना वो गलत हो गया, वो मैंने सही से नहीं लिखा. एंड द रिजल्ट्स केम आउट. द गाय हु वाज बोस्टिंग कि उसने 2 घंटे में सब किया, उसको मिला 40. जो लड़की छाती पीट रही थी, मेरा तो क्या हो जाएगा, मैं तो फेल कर जाऊंगी, उसको मिला 90. Because of this very same effect. When you have less knowledge, suppose you came in, you knew qPCR, RT-PCR. So my idea is to take you to the peak of Mount Stupid, because यहाँ से ना आपको दिखेगा ये the slope of enlightenment, कि कितना कुछ जानने को है. ठीक है,
PCR तो हम लोग एमएससी में पढ़ते ही है, and Kary-Mullis invented it. PCR is polymerase chain reaction. There are two types of PCR. There is normal PCR, then there is RT-PCR. Also, there is another type that is quantitative PCR. Khatam. Now we know PCR. My point is to tell you that you don't know PCR. By the end of the day, you should feel very frustrated with yourself. कितना कुछ जानने को है. So I will take you to the peak of Mount Stupid. Then from there you can see the slope of enlightenment. तो ये जो स्लोप ऑफ एनलाइटमेंट है, तो बाय द एंड ऑफ द टॉक यू शुड बी हियर वैली ऑफ डिस्पेयर. मुझे कुछ नहीं पता, बट अगेन व्हेन यू आर इन द वैली ऑफ डिस्पेयर यू शुड बी एबल टू सी द स्लोप. आई वुड गिव यू विद द टूल्स ताकि आप घर जाके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वर्कशॉप इन दिस वर्ल्ड कहते हैं कि अटेंड दिस 5 days वर्कशॉप एंड यू विल बिकम अ मास्टर ऑफ दिस. मास्टरी टेक्स इयर्स. जितना ज्ञान मैंने आपको दिया, इट इज ऑलमोस्ट 7 to 8 years ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि राजकुमार सर ने देखा.